So I'm sure that the screen is visible and okay. So you forget what, what I said. Let us move to our uh, current affairs. So of course I'm following Vision again. An underground neutrino observatory. Start gathering data on neutrinos. So let us just see what is neutrinos first. So a neutrino is a subatomic particle with mass such smaller than other elementary particles. So basically, a neutrino it is like widely present in the solar system. ठीक है तो थ्री टाइप ऑफ न्यूट्रिनोज होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून च्यून न्यूट्रिनो ठीक है तो न्यूट्रिनो changes between type as they travel ठीक है so the process is called neutrino oscillation देखो ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी प्रोसेस चेंज कर लेंगे ठीक है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं उसे ऑसिलेशंस बोल देते हैं ऑसिलेशंस लाइक यहाँ से यहाँ से यहाँ चेंज कर ली यहाँ से यहाँ तो स्टेट चेंज इज कॉल्ड एज ऑसिलेशंस key characteristics it has a spin of half with a net neutral charge these are not our tasks to go scientifically what it is but okay fine so let us just go with the Juno itself so Juno is basically Jingman underground neutrino observatory ठीक है Jiang Jiangmen underground neutrino observatory तो ये चाइना की है basically now let us go with the contribution in studying की contribution क्या है basically it would be able to observe neutrinos from sun gaining a real time view of solar process तो neutrinos जो हर जगह present है उससे help क्या मिलेगी आपको जो sun है उससे जो भी न्यूट्रिनोस निकल रहे हैं सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है ये ठीक है तो उससे आप एक रियल टाइम व्यू ले पाओगे ठीक है देखो अगर एक पिक्चर होती है ना अगर आप उसके पिक्सल को समझ गए ना इसके जो पिक्सल्स हैं इसको समझ गए आप then you're going to uncover the picture what is it behind the so that is what है तो आप सन की जो सोलर सिस्टम को आप समझ पाएंगे ठीक है it would also study neutrinos given off by the radioactive decay of uranium and thorium in the earth and to better understand mental convention during driving tectonic plates देखो अगर आप न्यूट्रिनोज आर प्रेजेंट एवरीवेयर तो वो अगर रेडियोएक्टिव डिके समझ गए यूरेनियम और तो यू कैन सी द टेक्टोनिक प्लेट्स आर कनेक्टिंग ठीक है तो इंडिया की जो ऑब्जर्वेटरीज हैं इंडिया की बात करेंगे तो आईएनओ इज अ ठीक है सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी ठीक है बोथ नाउ मूविंग नेक्स्ट ice cube of its kind designed to observe the cosmos from deep is ice cube neutrino observatory. Next is China की एक और है. This is China's Trident. Tropical Deep Sea Neutrino Telescope and US की GEO. So this is Deep Underground Neutrino Experiments. ठीक है तो बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स के जो सोर्सेज हैं लाइक
जो भी स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, गामा रेज बर्स्ट हो रही है, उनके बारे में आप बेसिकली पता लगा सकते हो। जूनो मिशन 2011, so you can just 2011 to Jupiter. Okay, Meta must face US state lawsuits over teen social media addiction. Of course, these are not our task, but let us just go with the India's initiative. Age restriction by social media platform like Meta honors of Facebook and Instagram, which has a self-imposed minimum age 13 years. Digital de-addiction centers. Kerala Police provides free counseling to kids up to 18 years of age. So this is digital, very important by initiative by the so this by the Kerala Police, of course. Central Board of Secondary Education has issued guidelines in 2017 to school on the safe and secure use of internet, of course. तो इससे हो क्या रहा है कि मेंटली देखो आप पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, आउटडोर एक्टिविटीज आप इंक्रीज कर रहे हो, जैसे कि आप 9 to 13 एज में आपको बाहर खेलना चाहिए, यू आर वाचिंग द वीडियोस प्लेइंग गेम्स विद द इंटरनेट, दैट इज नॉट गुड। यू आर एक्सपोज टू इंटरनेट, यू आर एक्सपोज टू साइबर स्टॉकिंग, प्रमोट्स सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है। तो मिनिमम एज होना चाहिए इसके लिए, या फिर इंटीग्रिटी बेस्ड टूल होना चाहिए कि आप यही यूज़ कर सकें, इसके अलावा कुछ नहीं। Okay, so Supreme Court questions feasibility of Gram Nyayalayas. So SC raised a concern regarding the feasibility of setting up Gram Nyayalayas or village court as mandated by the Gram Nyayalayas Act 2008. So Gram Nyayalayas are just basically, you know, the three-tier system of the government, sorry, three-tier system of the panchayats, village पंचायत देखेगी, यहाँ ग्राम सभा देखती है, और यहाँ पे ग्राम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना। यू कैन सी ना, यहाँ पे न्यायालय बनाने की यानी कि कोर्ट्स बनाने की बात हुई थी 2008 में। तो ग्राम न्यायालय से होता क्या है, एंश्योर, ठीक है, फॉर सिक्योरिंग जस्टिस, ठीक है, आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन, जस्टिस है जो वो किसी भी कारण से डिनाई नहीं होना चाहिए फॉर अ पर्सन ऑन द सोशल बेसिस, इकोनॉमिक बेसिस और अदर डिसेबिलिटी के बेस पे, ठीक है। Establishment of the Gram Nyayalayas by states UTs is mandatory or not. Section 3 of the Act provides the government may constitute. It says may. So you can see that it is not constituted. है ना? Visibility है, अभी भी check हो रही है, but it is not constituted. Resource crunch. So state governments already facing limited resources on regular courts, है ना? Of course courts के ऊपर तो दबाव है ही. तो अगर एक हो सकता है कि कोर्ट के ऊपर दबाव है तो हम ग्राम पंचायत से ग्राम न्यायालय बना दें, है ना, ठीक है। बट चैलेंजिंग पार्ट इज दैट कि स्टेट के पास कोर्ट्स के पेमेंट के लिए नॉट इजी बनी है नहीं। तो अगर कोई और इंस्टीट्यूशन खोला जाता है तो इट शुड नीड ऑफ कोर्स मनी, है ना, फाइनेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बर्डनिंग के लिए, ऑफ कोर्स, है ना। एस्टेब्लिश इंटरमीडिएट लेवल पंचायत और अ ग्रुप ऑफ कॉन्टेजियस पंचायत, ऑफ कोर्स। State government appoints a न्यायाधिकारी for each ग्राम न्यायालय in consultation with the high court, ठीक है। तो न्यायाधिकारी with the consultation of high court से एक बंदा यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। Jurisdiction कैसे होंगे? मोबाइल कोर्ट होगा एंड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल jurisdiction. So that is very important. क्रिमिनल jurisdiction आ रहे हैं उनके पास, ठीक है। मोबाइल कोर्ट, क्रिमिनल jurisdiction, dispute process कॉन्सलेशन से सॉल्व होगी, ठीक है। कॉन्सलेशन कि आपको let us go with that. Social workers may be appointed as conciliators. They are not bound by the Indian Evidence Act 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, but by principle of natural justice. Natural justice and the criminal के बीच बहुत difference है. Implementation status of Gram Nyayalaya. So there are initial target of 2500 Gram Nyayalayas. However, fewer than 500 has been established. So 500 तक की बने अभी, ठीक है।
with only 340 operational, 500 में 314 ऑपरेशनल। तो टारगेट कुछ था, बने कुछ हैं, ऑपरेशनल कुछ हैं। Okay, under Graham Nyaya scheme, centrally sponsored scheme, Union government provides financial assistance to states to set up Graham Nyaya. Of course, under Graham Nyaya scheme. ठीक है. So Supreme Court has a feasibility. So this can be seen as local government, self-governing गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में आ गई आपकी पंचायत। कंसर्न ओवर नॉन एक्शन बाय स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा अगेंस्ट स्टबल बर्निंग। ओके, दिस इज जस्ट स्टबल बर्निंग अगेन। सो इसमें कोई लॉ अगर आता है तो दिस इज नॉट, court stated that the state have not taken any steps to implement the direction issued by the Commissioner of Air Control Management. So this is basically not important. पराली और स्टबल जो बर्निंग हो रही है उसके कारण, डिफरेंट गैसेस के कारण। तो मैं एयर पॉल्यूंट देख सकती हूँ, PM10, PM2, NOx। तो ह्यूमन हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं इससे। तो कुछ इस पे लिए गए हैं अभी भी बहुत कुछ कारण। ठीक है, न्यूट्रिएंट लॉ, ऑफ कोर्स कहीं कई जगह बहुत फर्क पड़ रहा है ना। एयर क्वालिटी इज द मेन थिंग। नाउ ignore the things. International Union of Conservation of Nature, IUCN, released a flagship report titled Agriculture and Conservation. So IUCN flagship report comprehensively explored the complex relation between agriculture and conservation. So एग्रीकल्चर का जो इफेक्ट है बायोडाइवर्सिटी पे, वो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर जो है वो स्पेसिमेंस को इफेक्ट कर रहा है, जो कि आईयूसीएन बेसिकली आपके जो एनिमल्स हैं, जैसे कि उन एनिमल्स एग्री बेसिकली आईयूसीएन स्टेटस होता है ना। तो बेसिकली जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको लेके जो रेड लिस्ट में, मतलब वो खत्म ही होने वाली है एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से उनको हार्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें ये आपका खेत है, इसमें रेड लिस्ट वाली चीज़ लगी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो प्रैक्टिकली आपने वो खेत जोतना है, ठीक है, आपको प्लफिंग करनी है वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप सारा का सारा खेत जोत दोगे। आपकी वो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, आपको नहीं पता था वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपके एग्रीकल्चर की वजह से वो एंडेंजर्ड स्पीशीज तो गई ना, तो 31% ही बची है। Direct threats from agriculture include conservation of natural habitats of croplands, pasturelands and plantation and irrigation। तो आप किसी भी डायरेक्टली, अगर आप जनरलाइज्ड वे में देखो तो किसी भी, अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आप उस पर हम प्लफिंग करके कुछ वाला कुछ क्रॉपिंग करोगे ही करोगे। देयर आर क्रॉपलैंड्स, प्लांटेशंस, इरिगेशन, स्पेशलाइज्ड लैंड्स, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं वो उस जगह के। फॉर एग्जांपल इस जगह पे नेचुरली फॉर एग्जांपल राइस क्रॉप होनी चाहिए, बट यू आर गोइंग द कॉर्न क्रॉप, ठीक है, दैट विल डायरेक्टली थ्रेटनिंग द एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स indirect impacts through introduction of invasive alien species, nutrient loading, soil erosion, agrochemicals and climate change. This is very much important. Alien species मतलब वो यहाँ की है नहीं चीज़, आप only for the money purposes और any other thing जो भी है उसको लगा रही हो, ठीक है। न्यूट्रिएंट लॉडिंग ऑफ कोर्स, एंड सॉइल इरोजन हो रही है ठीक है। एग्रोकेमिकल्स का यूज़ जो हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ रहा है बायोडाइवर्सिटी। न्यूट्रिएंट डेंस होता है जो फूड, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड एटसेट्रा एटसेट्रा टोन, है ना। तो न्यूट्रिएंट डेंस जो होना चाहिए वो खत्म हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, about 70% of species on IUCN red status have agriculture documented as a habitat। बायोडाइवर्सिटी पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि 17% ऑफ द स्पीशीज ऑन IUCN जो रेड लिस्ट में है हैव एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंटेड एज अ हैबिटेट। तो बेसिकली अब मेरे खेत में ये लगा है, ठीक है, ये किसी जगह पे IUCN रेड स्टेटस है, ठीक है। तो ये जो लैंड है इट इज डॉक्यूमेंटेड एज अ हैबिटेट ऑफ दिस थिंग। फॉर एग्जांपल ये कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ है जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है, और मुझे IUCN का रेड स्टेटस मिल गया, मुझे
इस प्रॉपर प्लेस को मैंने हैबिटेट में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं क्रॉप नहीं करूँगा इसे, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। Provisioning services, regulating the maintenance of species of course. Now coming to the recommendation of aligning agriculture with conservation, agriculture sustainability होनी चाहिए, economic services maintain करनी पड़ेंगी. Now the reforming of the food policy. Let's just write it down first. Okay. Okay. Delhi High Court authorizes posthumous use of the cryopreserved semen for reproduction. Okay. Okay. So Delhi High Court is not of what like highlights of judgment are they कि no prohibition against the posthumous reproduction. तो semen preserved था किसी person का, तो जो frozen sperm था उसका use लगता है for that purpose only. He attempts to obtain a pregnancy by handling the sperm or the oocyte outside the human body and transferring the gamete into the reproductive system of the woman. ठीक है. Invert of fertilization, surrogacy, gamete, ठीक है. These are the things. Art regulations अगर आप देखो तो regulation and supervision of art clinics and banks, prevention of misuse, safe and ethical practice and surrogacy regulation acts, दो acts हैं हमारे पास इसके related. So it is a Art Act 2021 and Surrogacy Act 21 again. Moving further, we had a multi-track diplomacy. First ASEAN Indian Track 1 Cyber Policy Dialogue was held in Singapore. Okay, so Asian specific countries. So Track 1 diplomacy refers to the official diplomacy where communication is directly between among the governments. So government to government contacts, not the bureaucratic contact in between. Okay. Okay. So direct communication between the government and formal discussions are conducted by diplomat, head of the state and the other official authorities. ठीक है, तो basically diplomats कर ले बात अपने head of the state जो भी है. Other track of diplomacies are track 1.5. It occurs when government representative and non-government expert जो होंगे वो engage in dialogue or meetings together in less formal ways. Okay, तो track 1.5 भी होती है एक. So government and non-government expert exchange dialogue and it is less formal. वो बिल्कुल एक formal procedure है track 1 but it is not a formal, it is less formal than that. Okay, track 2 diplomacy, it denotes a purely unofficial. So track 2 is purely unofficial है. So government, तो government बट फिर भी ठीक है. सारथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट क्विंजली has unveiled solar assistant free transportation with hybrid controls and intelligent system. Sarathi. So it would help to reduce the post-harvest loss in perishable food transportation में जो भी. So Sarathi again important.
is a system which will reduce the post-harvest loss. So in perishable food transportation, so now Sarthi containers offer dual compartments both integrated with the IoT Internet of Things. Sensor temperature measure करने के लिए humidity, ethylene, CO2 level. 5I Alliance. So the 5I Alliance is a very important thing to know and very interesting as well. 5 आई जब भी हम सुनेंगे तो हमारे पास हमारे मन में आना चाहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसी की बात हो रही है और पांच मतलब पांच देश हैं इसमें देश यहाँ मेंशन है ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट ठीक है इट इज बोथ सर्वेलेंस बेस्ड एंड सिग्नल इंटेलिजेंस तो सिग्नेट काफ़ी डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रहे हैं उसमें 5 आई ज़्यादा मत करना करना लगेगा कनाडा के बिकॉज वो उन्हीं के साथ रहेंगे हमेशा ऑफ कोर्स Hellfire missiles. So India is signed a deal with US to acquire 170 AGM 114R Hellfire missiles. Hellfires are short-range air of 7 to 11 to precise strike, semi-active laser targets, so air defense targets, patrols, boats, armors, enemy combatants, and multi-purpose warhead. तो एयरक्राफ्ट पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल पे भी लग सकती है ठीक है एक तो फाइटर जेट्स पे लग जाएंगे और यूएवीज पे लग जाएंगे ना काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें सो स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ has cleared key road stretch passing through Karakoram. So Karakoram की बात करते हैं तो ईस्टर्न मोस्ट is located in the easternmost part of the range which is of course on the name of the wildlife on the name of the range wildlife sanctuary का नेम है ठीक है नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज लद्दाख तो इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ कोर्स इसके अराउंड है नॉर्थ में आपको semi arid characterized by cold desert heavy glaciations and branch Shyok rivers very important snow leopards Eurasian inex Himalayan wolves etc Samarth capacity building की scheme okay government recently extend the Samarth. So let us go with the Samarth first. So aims to encourage the support the industry in creating jobs in organized accelerator sector. So it aims to support industry in creating jobs. Okay, in organized textile and other sectors. Okay, so it is demand driven and placement oriented umbrella skilling program. So achievements are they train people of course. Okay. So इतना बजट है इसका सो दिस इज एक्सटेंडेड सो 24 से 25 एंड 25 से 26 वाई फाइनेंशियल ईयर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 now coming to this international energy agency it releases its flagship world energy outlook 2024 so world energy outlook 24 is by International Energy Agency. Coming to this, geopolitical tension and fragmentation are major risk of energy. Geopolitical basically
अगर आप कोई भी चीज़ देखो तो इट डिपेंड्स अपॉन द जियोपॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन ईच। देखो अगर गैस की बात करें, नेचुरल गैस की, तो रशिया इज़ अ गुड प्रोड्यूसर। रशिया की किस नेचुरल गैस बंद कर देगा वहाँ से, तो अगर ग्लोबल टेंशन होगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी, तो फिर सिक्योरिटी या रिस्क प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है। Around 20% of the today's global oil and LNG supplies flow through the Strait of Hormuz in the in a maritime checkpoint in the Middle East. Strait of Hormuz is a like एक गली टाइप मान लो जहाँ से 20% ऑफ द सप्लाईज ग्लोबल ऑयल की LNG की जाती है। ठीक है। अगर यहाँ के देश लड़ रहे होंगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट जरूर रहेगा। ऑफ कोर्स yes ना। Clean energy is entering the energy system at an unprecedented rate, with more than 560 gigawatt of a renewable capacity added in 2023. So clean energy is also entering the energy system, but उसके लिए आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन द लास्ट करंट अफेयर लेक्चर वी हैव आल्सो डिस्कस कि कॉल को रिप्लेस करने के लिए इंडिया को तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड बाय लो एमिशन सोर्सेज। ठीक है। Hand in Hand initiative. Food of Agriculture Organization FAO opened a 2024 Hand in Hand investment fund. So it is launched in 2019 by the Grain Food and Agriculture Organization. So basically, it is going to implement. It supports the ambitious programs to accelerate the agri-food system transformation by eradicating poverty, which is SDG 1. It uses the advanced geospatial modeling and analytics and robust partnership building approach. 72 countries, India is not the member of this. Okay, coming to the Algeria. So, President of India recently visited the Algeria. So you can see this is Algeria, Morocco, Libya, okay, Mali, and other things of Tunisia, Libya, जो भी है नाइजीर है ना मालीज geographical features. Okay, so let's okay. Juno is all important and many times it has been asked. So it can be added to science and technology. Social media addiction acts are very important. And I don't think so कुछ अच्छे से act हैं अभी इसके regarding, ठीक है, because the agencies means the meta the social media agencies जो भी हैं that are paying very much to the government, so they are not giving too much on this. But these problems की mental health or psychological reduce outdoor activities are major problems in nowadays. Okay, now feasibility of Gram Nyayalaya is very much important again because it directly related due to 73rd Amendment of Constitution. Okay, okay, this is stubble burning. So stubble burning is also very important. Air quality index. Okay. Agriculture and conservation from the biodiversity point of view, very important. दिस इज नॉट एज गुड एज बट अगर आप आर्ट के रेगुलेशंस बताएं आपको तो पहले नहीं था लॉ कि पोस्ट ह्यूमस किसी का स्पर्म यूज़ किया जाए, बट ऑथराइज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी फर्स्ट मीटिंग हुई थी आसियान कॉमन वेरी नो सारथी। ठीक है। इट इज़ बेसिकली सोलर रेसिस्टेंस से ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक इंटेलिजेंट सिस्टम जिसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एथाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स मेंटेन रहेंगे और सभी एक एप्लीकेशन की मदद से देख सकते हो आप। ठीक है। 5i अलायंस, इंटेलिजेंस एजेंसी, हेल्थ फायर मिसाइल जो हम यूएस से बाय कर रहे हैं, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टेक्साइल सेक्टर की एक स्कीम। ठीक है। आउटलुक एनर्जी के लिए हैंड इन हैंड इनिशिएटिव। And this is for now. This is enough. Now I will go further in the next lecture. Thank you.